Hello students, the question is an electron makes a transition from n equals to 2 level to n equals to 1 level in the Bohr model of a hydrogen atom. Its period of revolution, option A, increases by 87.5%, option B decreases by 87.5%, option C increases by 43.75%, and D decreases by 43.75%. So the problem is based on the topic, the Bohr model of hydrogen atom, and in particular some basic concepts of atom and nucleus. Now we know that the time period of revolution, the time period of revolution of an electron in an orbit is 2 pi r upon v. So the situation is like this: there is a nucleus, and surrounding this nucleus, suppose an electron is jumping from n equals to 2 level to n equals to 1 level. There is a jump from n equals to 2 to n equals to 1 level, and we have to find out the change in the period of revolution. Period of revolution means the time taken by the electron to complete one cycle. So how it changes when it moves from n equals to 2 level to n equals to 1 level, that thing we have to calculate. Now we know that the time period of revolution is 2 pi r upon v. This is the circumference and this is the velocity. So circumference upon velocity is the total time period. Now we also know that mvr is equal to nh upon 2 pi. Now from this relationship, we can calculate V. V is nh upon 2 pi mr. Now we can put this value of V from this equation. Let us call this equation 1 and this is equation 2. So we put the value of V from equation 1 to equation 2. So we get this value of time period as 2 pi r upon nh upon 2 pi mr. So this comes out to be 4 pi square mr square upon nh. Now we also know that the radius of the circular orbit, radius of the orbit of the movement of electron is directly proportional to n square. That is the number of orbit. So we put this value, we put this concept here. So 4 pi square m, and if we take the things in direct proportionality, then we can put this value of r as n square here in terms of proportionality upon nh. Now this is r is directly proportional to n square, and when it is directly proportional to n square, then its square become n to the power 4, and n to the power 4 upon n is basically n cube. So we can say that the time period is directly proportional to n cube, and all the rest of the terms like 4 pi square m and h, these are basically the constant terms. So in this way we can say that the time period of revolution is directly proportional to n cube. It is directly proportional to n cube. Now we have to find out the change in the time period of revolution. So the change in time period is given by the final time period, minus initial time period upon the initial time period into 100. Now the final time period, let us call the constant as k. So this is t equals to k n cube. So we can write it down as T final. Final is the n equals to 1th shell. So n equals to 1, it means that k into 1 cube minus initial. Initial is basically k into 2 cube upon initial, which is k into 2 cube multiplied by 100. Now this comes out to be 7k upon 8k into 100, and this is in minus. So this value comes out to be minus 87.5%. So we can say that there is a decrement in the value, decrement in terms of percentage, which is 87.5%. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है n equals to 2 से n equals to 1 लेवल पे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में। इसके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज होगा तो कितना होगा, डिक्रीज होगा कितना होगा। अगर एनालिटिकली इस क्वेश्चन को सोचें तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं प्लानिटरी सिस्टम से। हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जो जितना नियर प्लैनेट होगा उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल मरकरी की हम बात करें
मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम होता है क्योंकि उसे एक सर्टेन कम दूरी तय करनी है। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट काफ़ी हद तक हम इलेक्ट्रॉन्स में भी देखते हैं, एटम्स में भी देखते हैं। एटम के केस में अगर हमें देखना हो कि अगर ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे, तो कितना परसेंट चेंज आएगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, विच इज सर्कम्फरेंस अपॉन द वेलोसिटी, mvr equals to h upon 2 pi, एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे nh upon 2 pi mr, और nh upon 2 pi mr वैल्यू इनपुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में हम देखेंगे, और साथ के साथ हम एक ये भी रिलेशन यूज करेंगे कि दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फाइनली हम ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकल के आता है n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n क्यूब। परसेंटेज कितना चेंज हुआ उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू द फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड इनटू 100। फाइनल टाइम पीरियड से मतलब है फाइनल जिस शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, विच इज n इक्वल्स टू 1, सो k इंटू 1 क्यूब माइनस k इंटू 2 क्यूब अपॉन k इंटू 2 क्यूब। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं -7 k अपॉन 8 k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड -7 अपॉन k 8k इंटू 100, ये हमारा निकल के आता है -87.5%। It means that there is a decrement by 87.5%. So this is the answer. Option B is correct here. So hope you understand the explanation.